Hello students, Ncert Solutions, Class 11th, Physics, Chapter number 12, Thermodynamics. Question number 8. An electric heater supplies heat to a system at a rate of 100 watt. If the system performs work at a rate of 75 joules per second, at what rate is the internal energy increasing? Please subscribe the channel and press bell icon to get all notifications. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है this heat supplies to system at a rate of 100 watt, that is delta Q upon delta T. This is 100 watt is given. इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाईज करता है हीट किसी सिस्टम को किस रेट से 100 वाट एट ए रेट ऑफ 100 watt, that is delta Q upon delta T is equal to 100 watt. And if the system perform work at a rate of 75 joule per second, that is delta W upon delta T is given 75 joule per second. This is the work at a rate of 75 joule per second, that is delta W upon delta T किस रेट से वर्क होता है, that is given delta W upon delta T is equal to 75 joule per second. And हमें कैलकुलेट करना है what rate, at what rate is the internal energy increasing. This delta U upon delta T हमें कैलकुलेट करना है. तो we know that this from the first law of thermodynamics क्या होता है, delta Q is equal to delta U plus delta W होता है. Delta Q is the heat given to the system and delta U is the change in internal energy of the system, and this is the delta W, and delta W is the amount of work done by the system on the surrounding. Now this can be written as इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डेल्टा टी से हमने दोनों साइड में डिवाइड किया, तो दिस इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी. तो दिस इज द रेट ऑफ हीट एंड दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी का रेट है और दिस इज रेट ऑफ वर्क डन. नब ये हमें गिवन था 100, ये हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी एंड डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी इज गिवन 75. देन on solving, this delta U upon delta T is equal to 100 minus 75 and this is 25 joule per second. So this is the rate at which the internal energy is increasing. So this is the answer. Now in case any doubt, please write your doubt in comment box and please like and share this video. Thank you.